गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कशन करेंगे शवग्रह के ऊपर। शवग्रह के विषय में आचार्य वाग्भट कहते हैं कि यह दो शब्दों से मिलकर बना है, शव प्लस ग्रह। शव जिसको हम डॉग के समान मानते हैं, इसलिए हम इस ग्रह को डॉग डेमन के रूप में भी कह सकते हैं। ग्रह जैसे हम जानते हैं, ग्रह की उत्पत्ति ग्रह उपद्यन धातु गणाति ग्रह से बताई गई है। यह ग्रह भगवान शिव और पार्वती के द्वारा अपने पुत्र की रक्षा के लिए बनाया गया था। आचार्य वाग्भट के अनुसार इस ग्रह के लक्षण इस प्रकार हैं: कंपो हर्षि रोमत्तम श्वेत चक्षु निर्मलम बहिरायमन जीवादंशो अंतकंड कुंजनम धावनम विटसेकंदत्थम क्रोशनम च शक्त्युनि। कंपन, रोमांचता, श्वेत, चक्षुओं का बंद हो जाना, बहिरायमन पीठ का बाहर की तरफ मुड़ना, जीवा दंशु जीवा का काटना, अंतकंठ कुंजनम कंठ के अंदर कुंजन या शब्द का उत्पन्न होना, धावनम बालक का इधर उधर भागना, विट से गंधोत्तम और बालक के समीप जाने पर मल के समान गंध का आना, क्रोशनम जो है कुत्ते के समान चिल्लाना आदि लक्षण हमें प्रभावित बालक के अंदर मिलेंगे। है कि यह शवग्रह जो है वह हमें रेबीज से प्रभावित बालक में जो लक्षण मिलते हैं उनके समान लगता है, अर्थात इस ग्रह को हम रेबीज के नाम से भी जान सकते हैं, क्योंकि इनके सिम्टम्स को हम देखते हैं। द चाइल्ड डेवलप ट्रेमर्स विद स्वेटिंग, क्लोजिंग ऑफ आईलिड एंड इरेक्शन ऑफ हेयर्स, which is known as रोमहर्ष. It is present in rabies disease. He may bite his tongue. It is also present in rabies. The posture becomes opisthotonous. या बहिरायमन जिसको कहते हैं वह भी हमें रेबीज से प्रभावित बालक के अंदर देखने के लिए मिलेगा। टिपिकल क्राई और साउंड लाइक बार्किंग ऑफ द डॉग्स. It is also present in rabies. The child becomes runs. It is also present in rabies. Body emit the fecal smell. It is not present in rabies. We can conclude that Shabgrah can also be understood as an rabies. The treatment said in Ayurveda Granth is first is परिषेक, बिलवादी पत्रक्वात से परिषेक करवाना चाहिए। व्यस्ता, शतावरी, सारीवा, दूधी, अरंड, सहदेवी एवं त्रिकटु का कल्क और दूध से सिद्ध तेल द्वारा अभ्यंग और इन्हीं औषधियों से सिद्ध घृत का पान भी करवाना चाहिए। नस्य औषधियों को सुरा में पीसकर लेप कराना चाहिए। गाय एवं बकरी के मूत्र से भावित सूखी मछली के चूर्ण से धूपन करवाना चाहिए। बचा, भूत केसी, सहदेवी आदि औषधियों को धारण करवाना चाहिए। कूड़े के ढेर के समीप स्नान कराना चाहिए। आचार्यों ने इसके लिए रक्षा सूत्र का पाठ भी बताया है। रक्षार्थम कार्तिकेयस्य कृतिका या अग्निशूल भी यो असो शव विग्रह सृष्ट स देवा तो अभिरक्षति। Rabies graha, it is a fatal viral encephalitis caused by a single-stranded RNA virus which belongs to the genus Lyssa virus. The family is Rhabdoviridae. It is a zoonotic disease transmitted to human by the bite, lick, and scratch of the infected animals, most of the dogs. Never transmitted by inhalation and the organ transplantation. अगर हम यहाँ पर कहें कि जो ह्यूमन टू ह्यूमन बाइट होती है वह भी हम रेबीज के अंदर ही कंसीडर करते हैं। 20 to 80 days, but the peak incidence is seen, a peak incubation period is seen is as 30 to 60 days. Genesis, the virus first multiplies in the striated muscles, then ascend axons from the periphery to the spinal cord and eventually to neurons of the brain. Neuronal destruction in the brain stems and the medulla that cause the severest change in the pons and the fourth ventricle except cerebral cortex. The clinical features is drooling of the saliva, convulsion, exaggerated sensation at the bite site, excitability, loss of the feeling in the area of the whole body, loss of muscle functions, low-grade fevers, muscle spasm, numbness and tingling sensation, pain at the site of the bite, restlessness and swallowing difficulties. Drinking causes spasm of the voice box.
the disease progresses acutely from a non-specific prodromal phase with the fever and vague symptoms to a neurological phase characterized by anxiety, paresis, paralysis, and other signs of the encephalitis. Spasm of swallowing muscles such as dysphagia can be stimulated by the sight, sound, or perception of the water. Hydrophobia, aerophobia, and delirium. Convulsions can develop, followed rapidly by coma and death. हम यहाँ देख सकते हैं कि जो स्पाज्म आने लगते हैं swallowing muscles के कारण, जैसे हम dysphagia which can be stimulated by sight, sound and perception of water. बालक अगर हम उसके ऊपर पानी छिड़कते हैं या पानी का जैसे ही वो पानी को देखता है या उसको पानी का परसेप्शन होता है तो उसको उससे डर लगने लगता है, दैट इज हाइड्रोफोबिया. अगर एयर से उसको डर लगने लगता है, दैट इज एरोफोबिया. एंड लेटर ऑन द चाइल्ड suffering from the delirium and convulsions, which rapidly goes towards the coma and death. Once the clinical sign manifest, most patient dies within 7 to 14 days. It is very fatal disease. Diagnosis is based on recently exposure of the rabid animal. Hallmark of the disease is nigri bodies found in brain. Definitive diagnosis can be made by demonstrating virus in neuronal tissue, corneal impression, or the nasal biopsy. Management is no known cure after the onset of the clinical sign, but before the appearance of clinical features, if the patient come to the clinic on the time, that we can distribute its management into the two part, that is half wound treatment and half modern tissue rabies immunoglobulins culture vaccines. In this, there are 5 steps. First step is washing the wound with the tap water and detergent soap for 10 minutes to shedding virus load. It can be done under the tap water. Step 2. Application of antiseptic to the wound to remove remaining virus particles and prevention of the secondary infections. Step 3. Infiltration of the wound with the rabies immunoglobulins, which neutralize the virus and make a coating around the virus so that it cannot come into the contact with nerve endings. The fourth step is vaccination with anti-rabies vaccines, and step 5 is tetanus prophylaxis, the administration of tetanus toxoid or tetanus immunoglobulins. Precaution during the wound management is suturing of the wound always avoided. If the wound is very large or the big size, then give 1 or 2 loose suture. Never give tight sutures because it causes the short incubation period. रेबीज के लिए 3 वैक्सीन बताई गई हैं. प्यूरिफाइड चिक एम्ब्रियो सेल वैक्सीन. सेकेंड इज ह्यूमन डिप्लॉयड सेल वैक्सीन, which is given in a dose of 1 ml intramuscular on the deltoid or the vastus laterals at the anterolateral aspect of the thigh in children. And third is purified varicocele rabies vaccines, which is given in a dose of 0.5 ml intramuscular. In case of the pre-exposure, we give on the first day, after 7th day, and on the 21st day. And in the case of the post-exposure, then we can give these vaccines as on the first day, then 3rd day, then 7th day, then 14th day, then 28 days, and last is 19 days. Rabies immunoglobulins is of 2 types. In case of the post-exposures, along with the vaccines, we can give rabies immunoglobulins. There are 2 types. First is the human rabies immunoglobulins, which should be preferred in a dose of 20 international unit per kg. Maximum dose is 1500 international unit. And second is equine rabies immunoglobulins in dose of 40 international unit per kg. Maximum dose of 3000 international unit. Both the immunoglobulins should be given after the test dose. If the child is sensitive to these immunoglobulins, then we cannot give the rabies immunoglobulin. Avoid contact with the animals you do not know.
Second is get vaccinated if you work in a high risk occupation or travel to countries with a high rate of the rabies. Make sure your pet receives the proper immunizations. Follow quatrain regulation on the importing dogs and other mammals in disease free countries. Thank you.